students, welcome back to my lectures of class 9th physics. Here in this video we will see some graphical questions, that how we can solve the graphical questions. So here we have the question, the graph below is the distance time graph. मतलब यहाँ पर ये हमारे पास distance time graph है, and calculate the speed of the body as it moves from. मतलब हमें क्या calculate करना है? We have to calculate speed कब, जब body कहाँ से कहाँ move कर रही है, from A to B, and second case B to C, and third case C to D. इन तीनों cases में हमें क्या calculate करना है? We have to calculate the speed. So first of all, we will see when the object is moving from A to B. Okay, first of all from A to B. So let us see that from at point B, we have the time is 5, and at point B, we have the distance is 3 meters. Okay, so here how to calculate the speed? We have speed is equals to distance upon time. So if we have to calculate the speed, then we have to calculate the distance. Distance कहाँ से कहाँ तक object ने travel की है? It is from 0 to 3. So I can write this is the final position, this is the initial position. So I can write here 3 minus 0. That is final is 3 and initial is 0. 3 minus 0. By time, मतलब A से B तक के लिए time कितना लिया है? So this time the starting point is A and final point is B. So the time at final point is 5 and initial is 2. So I can write here 5 minus 2. Final is 5 and initial is 2. So here the distance is 3 and the time 5 minus 2, that is equals to 3. So it will be 1 meter per second. In this way we can calculate the speed when the object is moving from A to B. Now the second case, that is from B to C. जब object B से C तक move करेगा तब उसके लिए speed क्या होगी? Now from B to C, this C point is at the time 7 seconds and point B is at 5 seconds. Now this speed is equals to distance upon time. Now distance covered from B to C, final distance C is at 3, so final is at 3. The initial which is at point B, यहाँ भी distance क्या है? 3 है, so 3 minus 3 by time 7 minus 5, 7 minus 5, तो 3 minus 3 that is equals to 0. तो यहाँ पर कितना हो गया? 0 meter per second. और यहाँ पर 0 क्यों हुआ? Because here the distance that is not changing. मतलब अगर B point पे distance 3 meter थी तो C point पे distance कितना हो गया? 3 meter. Means you can say the object is at rest. Means the object is not moving. तो अगर object move नहीं करेगा तो यहाँ पर speed क्या हो जाएगी? 0 meter per second. Third point, that is from C to D. Here again we have to calculate the speed. Speed is equals to distance upon time. So यहाँ पर distance from C to D, this point D, here the time is 10 seconds and here the distance is 8 meters. So at point D the final distance is 8. So I can write here final 8 minus initial, that is at point C, कितना हो गया? 3. So 8 minus 3, that will be the distance covered. Final minus initial. What about the time? The final time at point D, that is 10 minus initial point, that is at point C, that is equals to 7. So here 8 minus 3, that is 5 divided by 10 minus 7, that is equals to 3. तो कितना हो गया? 5 by 3 meter per second. Or I can write it to be 1.67 meter per second. This is what? The speed when the object is moving from C to D. So in this way we can calculate the speed from the graph. Let us see one more question related to this graphical questions. The velocity time graph of an ascending passenger lift is shown in the figure below. इससे पहले जो हमारे पास कर्व था वो क्या था? That was the distance time curve. यहाँ पर क्या है हमारे पास? Velocity time curve. And then we have to find the acceleration of the lift. और एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ कैलकुलेट करना है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है. देन बिटवीन सेकंड एंड 10 सेकंड, सेकंड टू 10 सेकंड तक कैलकुलेट करना है. एंड देन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स you have to calculate the acceleration. So let us take the first one. You have to calculate during first 2 seconds. So in the first 2 seconds, here you have to calculate the acceleration. So we have acceleration is equals to change in velocity upon time. So in the first 2 seconds we will see that
how much the velocity has changed, that is final velocity minus initial velocity. यहाँ पर देखते हैं 0 से a तक, मतलब 2 सेकंड के अंदर गया, तो यहाँ पर final velocity कहाँ पर है? At point A. So here the final velocity is 4 meter per second minus initial velocity. Initial velocity कहाँ से object start हो रहा है? From 0. So its initial velocity will be 0. Now what about the time? Time is 0 to 2. मतलब time कितना हो गया? 2. So here it is 4 by 2. That is equals to 2 meter per second square. That is the acceleration. Now second one is from 2 to 10. Okay, 2 to 10 we have to find the acceleration. That is the change in velocity upon time. Same formula. Now change in velocity at point B. The final velocity, if you will see here, the final velocity, that is 4.6. So I can write here final velocity 4.6 minus initial. Initial कहाँ से देखना हमें? We have to see between 2 to 10. तो जहाँ पर 2 सेकंड होगा वहाँ पर हमारे पास initial velocity होगी. So here initial velocity is 4. Okay. So 4 by the time from 2 to 10. We can write 10 minus 2. That is equals to 4.6 minus 4, 0.6 divided by 8. So here I can write 6 by 80. So it is 3 by 4 into 10. 3 by 4, that is 0.75 by 10. Or I can write it as 0.075 meter per second square. Got it? How we have calculated? That is the change in velocity upon time interval. Now the third one is during the last 2 seconds. Last 2 seconds. Here the final velocity at the time 12 seconds. तो यहाँ पर देखो final velocity कितनी हो गई? 0. So acceleration is equals to 0 minus. Now here we have to find the change in velocity upon time. So final velocity is 0. Now initial velocity at point B, that is equals to 4.6. कितना हो गया यहाँ पर? 4.6. Now the time 12 minus 10, that is equals to 12 minus 10. तो कितना हो गया? Minus 4.6. 12 minus 10, that is equals to 2. So it will be minus 2.3 meter per second square. Now here you can see from in the first 2 seconds this is positive. In the next second, in the next 10 seconds again positive, but in the last 2 seconds it is negative. So you can see here it is acceleration, here it is again accelerating, but from B to C it is deceleration or that is retardation, क्योंकि यहाँ पर जो acceleration वो कितना हो गया? नेगेटिव हो गया. फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो velocity वो कम हो रही है. जब भी velocity कम हो रही है acceleration क्या हो जाएगा? नेगेटिव. But if the velocity is increasing, the acceleration will be positive. So in this way we can solve the numerical for acceleration when we have the velocity time curve. So let us solve here one more question that is based on the graph. A body moves with a velocity of 2 meter per second for 5 seconds. Then its velocity increases uniformly to 10 meter per second in next 5 seconds. Thereafter its velocity begins to decrease at a uniform rate until it comes to rest after 5 seconds. ये हमें given question है. And then plot a velocity time graph for the motion of the body. हमारे पास यहाँ पर जो पूरा डेटा given है उससे हमें ग्राफ बनाना है. Okay, so we have to draw a velocity time curve. मतलब हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा time, that is in second, and here we will have velocity, that is in meter per second. अब इन्होंने क्या बोला? A body moves with a velocity of 2 meter per second for 5 seconds. मतलब अगर हम यहाँ पर माने up to 5 seconds, and here velocity of 2 meter per second. Velocity कितनी हो गई यहाँ पर? 2 meter per second. और वो जो velocity क्या है? Constant है. मतलब यहाँ पर 5 सेकंड तक जो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे. सो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट O, इट इज पॉइंट A. तो मतलब ये क्या हो गया? 5 सेकंड तक जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड. एंड देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली टू 10 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड. अगले 5 सेकंड में इफ आई कंसीडर हियर 10, बिकॉज फ्रॉम हियर 0 to 5 and then 5 to 10, so 5 to 10 it will be 5 seconds. So in next 5 seconds its velocity increases uniformly to 10 meter per second. मतलब यहाँ तक up to 10 seconds the velocity will reach up to 10 meter per second. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो velocity कितनी है? 10 meter per second. तो velocity कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? A से B तक. 5 सेकंड में कहाँ तक पहुँच गई velocity? Up to 10 meter per second. So from 5 to 10 seconds it reaches the velocity of 10 meter per second. Now after
its velocity begins to decrease at a uniform rate until it comes to rest after 5 seconds. अगले 5 सेकंड में, मतलब कितना हो गया, 10 + 5 15. its velocity becomes 0, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है. मतलब यहां से वापस से वो डिक्रीज होगा और वो कहां पर आ गया, इट कम्स टू रेस्ट. So you have to understand the numerical, and based on that numerical you have to draw the graph. So in this way we can draw the graph. Now this is the solution of first part. Now second part, from the graph find the total distance covered by the body. अगर हमें यहाँ पर total distance cover करनी है, ये हमने देखा था conclusion of from the velocity time curve, कि अगर हमें कहीं भी distance cover निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, you have to find the total area under that curve. तो ये जो total area है, ये एरिया अगर हम फाइंड कर लें देन वी विल गेट द टोटल डिस्टेंस. ओके, अब यहां पर क्या है, इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मार्क इट अप टू हियर. सो दिस इज ओ ए, इसको मान लेते हैं यहां पर ए डैश, और इसको यहां पर मान लेते हैं बी डैश. सो एंड दिस ए डैश एंड बी, and here B, B dash and it will be C. तो हमारे पास यहाँ पर 3 एरिया हो गए. This is the area number 1, this complete area, the area number 2, this complete area, and the area number 3, this one. This is the area number 3. Okay, so here the distance that is equals to area, first of all O, A dash, B dash and O. एरिया O, A डैश, B डैश एंड O, इसका एरिया हम निकाल लेंगे. फिर क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल A डैश B, A डैश B, एंड देन थर्ड दिस कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू एरिया B डैश C, B डैश C. आप यहाँ पर कैसे भी कर सकते हो, आप इसको अपने हिसाब से कितने भी फिगर्स में डिवाइड कर सकते हो, बट हमें फाइनली क्या करना है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है. नाउ हियर फर्स्ट वी हैव दिस रेक्टेंगल. सो एरिया इट विल बी हियर 2 into from 0 to B dash, that is equals to 10. So 2 into 10 plus now this triangle, that is right angle triangle. So half into base. Base कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, and this point is 5. So here I can write from A to A dash it's 5. So 5 into now height कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, it is 2 meter per second, it is 10 meter per second. So 10 minus 2 it will be 8 plus the third one that is again a right angle triangle. यहाँ पर क्या होगा, half base into height, तो कितना हो जाएगा, half base कितना है from 10 to 15, that is 15 minus 10 कितना हो जाएगा 5 into height, यहाँ से यहाँ तक B से लेके B dash तक height कितनी है, that is equals to 10 into 10. सॉल्व कर लेंगे इसको. 20 plus it is 5 4 जा again 20 plus यहाँ पर 5 5 जा 25. So 20 plus 20 plus 25 that is equals to 65 meter. It is the total distance covered by that object during complete motion. हमने क्या किया यहाँ पर, एक एरिया ये कंसिडर कर लिया, एक एरिया ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, और दूसरा क्या कर लिया, ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, तीनों का एरिया फाइंड कर लिया, एंड देन विल गेट द डिस्टेंस. दिस इज द कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम कर्व. So in this way we can solve the graphical question.